Good evening, sir. Very good evening, all. Very good evening, sir. So, today we are starting a very wonderful topic. The name TCM for ovary, right? But before doing the treatment, we should have the idea about the ovary, about the uterus, about the hormones. हमें पहले थोड़ा पता होना चाहिए ओवरी के बारे में, यूट्रस के बारे में, इसको प्रभावित करने वाले अलग अलग हार्मोन्स के बारे में. So quickly I will just few general introduction, then we'll proceed ahead. So let's see now. So first we will develop a very general idea about the reproductive system, about the ovary and all, right? So let's see this, a small, very small video. Female reproductive systems work together to allow humans to produce offspring and pass genetic information from one generation to the next. The male and female reproductive systems include organs that produce sex cells, organs that store or transport these cells, and accessory organs that facilitate or support reproduction. In the process of sexual reproduction, a sperm, the sex cell of the male, and an egg, the sex cell of the female, unite and merge their genetic information. This creates a fertilized egg. Pregnancy is a series of events through which a fertilized egg implants, becomes an embryo, and develops into a fetus. The resulting offspring carries genetic information from a male and a female into a new generation. So this was the general introduction of the reproductive system. Now we can see, if we talk about the female, the reproductive parts means our breast and the ovary, uterus. तो फीमेल में हम जब रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो ब्रेस्ट को और ओवरी एंड यूटरस को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काउंट करते हैं. सो आवर टारगेट इज ओवरी, बट ओवरी विल अफेक्ट द एंटायर बॉडी. ओवरी विल अफेक्ट द यूटरस, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट ओनली द, अगर हम सिर्फ if we only talk about the ovary, अगर हम ovary की बात करें, right? So first look at here, look at the ovary here. Like we can see here, this is the uterus. This is the uterus, right? This is also the uterus, and this is the entire part of the uterus. And in front of the uterus we can see the urinary bladder. अगर हम यूट्रस के आगे देखें तो ये क्या है? This is the urinary bladder in front of uterus, right? So when the female is having some uterine problem, it might affect the frequency of urination. अगर यूट्राइन प्रॉब्लम है तो वो आपके यूरिनरी ब्लैडर की फ्रीक्वेंसी को बदल सकता है. We can see the size of the urinary bladder. Now during the pregnancy, when their uterus is becoming in the bigger size, uterus coming in the bigger size, then there will be compression on the urinary bladder. So many female will notice the frequent urination, or they are not able to hold too much urine in the urinary bladder because of this pressure is coming from the uterus on the back side. तो आपने देखा है कि अगर प्रेगनेंसी के समय जब यूट्रस का साइज बढ़ जाता है और ये यूरिनरी ब्लडर के ऊपर कंप्रेशन क्रिएट करता है तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है. Even the female suffering with a uterine fibroid, it will also affecting the urinary bladder.
So we can see how they are closely attached with each other. Now, if we see here, on the both side of the uterus, we can see some this pipeline like structures. We can see here. आप देख सकते हैं यूट्रस के इस तरफ से ये एक पाइपलाइन जा रही है. We can see this is the pipeline. And from the other side of the uterus also this pipeline is going. This pipeline is called fallopian tube. इसे हम fallopian tube कहते हैं. Fallopian tube is play very important role क्योंकि fallopian tube में ही मिलन होता है किसका? sperm and ovum का. So what is happening? There is a formation of the ovum and there is a entry of the sperm. The meeting is happening inside this pipeline, inside this fallopian tube. जो sperm और ovum का जो meeting होता है, जो मिलन होता है, the sperm and ovum, the fertilization process is happening in this fallopian tube. So it's a very important, right? Sperm will be coming. Sperm पूरा रास्ता travel करके आता है. So if we'll see here, let's remove the urinary bladder to see the proper and clear image like here. So suppose now look at here. The sperm is entering and crossing this entire path. Sperm is entering and crossing this entire path, reaching to fallopian tube. So the fertilization process is happening in the fallopian tube, right? So it's a very important part. And we know there are many females having the blockage in the fallopian tube, right? Fallopian tube. Suppose if we cut this, अगर हम fallopian tube को बीच में से cut कर दें, suppose we are cutting it from the center, from middle. Suppose this is the fallopian tube, right? Okay, I told you the sperm is coming and entering in the fallopian tube. Suppose we are cutting from the middle and tightening with the knots. हमने fallopian tube को कट करके यहाँ गांठ बना के उसे टाइट कर दिया. Means we have braked the path. तो हमने fallopian tube को यहाँ से कट कर दिया और रास्ता ब्लॉक कर दिया. कट करके fallopian tube को गांठ लगा के बांध दिया. Then there will not be fertilization. तो इस ऑपरेशन को कहते हैं TT ऑपरेशन, ट्यूबेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी मीन्स ट्यूब को काट के अलग कर दिया, ट्यूबेक्टोमी, right? And this is a very you might be knowing this is the हम कहते हैं नसबंदी. यही नसबंदी का ऑपरेशन है. फीमेल में ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो यही होता है. They cut the fallopian tube. So fallopian tube play very important role and we can see both the sides. So again, I will bring a focus here. This is the uterus. ये हमारा uterus है. ये females में uterus होता है. And this is the uterus, right? This is the uterus. Okay. So we can see this, the uterus, the upper part of the uterus and the lower part of the uterus. We can see the upper part and the lower part, then the vagina, right? So we can see in the uterus, we can see the upper part which is called fundus. Uterus में भी हम upper part को fundus कहते हैं. This is called fundus of the uterus. This part is called body of uterus, right? तो ऊपर fundus हो गया, ये ऊपर का part fundus. Now we can see the sperm will travel and will cross this entire path, will reach here, then will go in the fallopian tube, फिर ये fallopian tube में जाता है, and then will meet with the ovum. Now ovum is coming from where? Ovum कहाँ से आता है? Right? So now look at here. On the other side of the fallopian tube, we can see this is the fallopian tube.
On the other side of the fallopian tube, we can see this is the structure attached here. This is called ovary. इसे हम ovary कहते हैं. What is called ovary? So we can see one ovary on the right side and one ovary will be on the left side here. So there are two ovary. We can see right and left. Okay. So let's see this. Only see this structure. So we can see the in front of the sacrum. कैसे ये हमारी यूट्रस और ओवरी लोकेटेड होते हैं, राइट? In front of the sacral bone. This is the sacral bone. Got it? So there are any disharmony happening in the uterus and ovary, it's a very common to have the pain in the sacral vertebra. कमर में, buttocks में दर्द होना, it's very common, right? So this is the area you can see here. This is the area where we are sitting on the buttocks. हम नीचे अभी बैठे हैं, buttocks पर ही तो बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हो. So the female suffering with the problem of the uterus and ovary, they might be having pain in this area. Okay, coming back to the front part. Let's see here. So we can see on the other side of the fallopian tube, there is attachment of ovary. So this is the part, ovary, one ovary on the right side and one ovary on the left side. Right? So now there are lots of इंसिडेंट्स हैपनिंग इन द ओवरी. ओवरी के अंदर बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, हम उनके बारे में जिक्र करेंगे बिकॉज वी वांट टू डिस्कस अबाउट दिस ओवरी which is on both sides, right side and the left side in the female. So female having two ovaries, right? Nowadays we know there are many problems happening in the females like polycystic ovarian syndrome. हम जानते हैं PCOS, it's a very common problem. Polycystic ovarian syndrome, right? And also there might be more male hormone formation. तो वो कहाँ बनता है, ओवरी के किस पार्ट में बनता है, कौन बनाता है, why the ovary is making male hormone. So when the female suffering with the ovarian problem, there are unwanted hair growth on the face, on the chin. हम देखते हैं कि जब भी ओवरियन डिस्टर्बेंस होता है तो फालतू के बाल पैदा हो जाते हैं हमारे चिन के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर. सो फीमेल ओवरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ स्किन एंड हेयर, राइट? तो फीमेल में ओवरी का ठीक होना बहुत जरूरी है, तभी उसकी स्किन और हेयर ठीक रहेंगे. In the female, ovary is very important. If ovary is good, then the female is having good libido, means good sexual desire. And she will be very good and fertile, right? If the ovary is disturbed, it will change the entire mood of the female, right? She might be sad, she might be depressed if the hormones are disturbed. So ovary play very important role in the, like for the body, like for the beauty of the body, for the beauty of the hair, for your mood, regulation of the mood. This ovary play a very important role, right? So we're discussing this ovary. Now we already understood where is the ovary located. हमने समझ लिया है कि ovary कहाँ पर located है. Let's see here. ओवरी कहाँ लोकेटेड, we have seen now. क्या any problem happening? Okay. देखिए मैं कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, बार बार मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग एकदम टाइम पर ही मैसेज कर रहे हैं कि क्लास में नहीं. आई ऑलरेडी एडिट.
एडिट पूजा दीदी, एडिट क्या है? हाँ ओके ओके कर दो। फाइन। और किसी का मैसेज नहीं है ना ग्रुप में, कोई छूट गया हो? So everyone is comfortable and can hear very properly. Okay. So we can see in this image the how the uterus and ovary located. So let's see this image now. And if you see this image, you can see on the back side there is a sacral bone. हमारे पीछे ये sacrum bone है, सबसे नीचे tailbone है, right? Then we are coming in the center. We can see the big cavity here, so that there is a possibility of the growth of the fetus here. ये पूरी cavity है, we can see they are the right hip bone and the left hip bone, and this is the pelvis, entire pelvis, right? On the back side we can see the sacrum, and we can see the how the cavity has formed. So fully protecting, एक जैसे किला होता है ना, किले की तरह ये पूरी कैविटी चारों तरफ से एकदम कैद है कि यहाँ पर कोई भी इंजरी होने की पॉसिबिलिटी ना हो अगर अंदर कोई फीटस पल रहा है. So there shouldn't be any harm. The highly protected here, right? So we can see how the pelvic bone and sacrum bone is covering this entire structure, and we can see the ovaries here, both the side. यहाँ पर ovary दोनों तरफ located. So we can see one ovary on the right side, one ovary on the left side. तो हम देख सकते हैं दो ओवरी, right? So it's clear now. Fine. So whenever we talking about the ovary, जब भी हम ओवरी के बारे में बात करते हैं तो हमें वो कहानी हमेशा ब्रेन से स्टार्ट करनी होती है. We always have to start from the brain, right? So we know in the brain there is a one very important part that is called limbic brain, or we can tell emotional brain. Emotional brain is getting affected with the emotions like fear, emotions like anger, aggression. ये जितने भी इमोशन होते हैं, these all affect your limbic brain, right? All the different emotions, even joy, sadness, depression. Then accordingly limbic brain is handling our hypothalamus of the brain. हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस को ये कंट्रोल करता है. The hypothalamus is the supermaster gland.
supermaster gland and found inside the brain. Why the hypothalamus is getting affected from the different emotions? Because it's under control of the limbic system. Hypothalamus के ऊपर इमोशन का असर होता है क्योंकि यह लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशनल ब्रेन के अंडर में काम करता है. इसे कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड और बीटल मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, राइट? क्योंकि ये एक मास्टर है जो दूसरे मास्टर को कंट्रोल करता है. फाइन. नाउ एज पर द hypothalamus is very important part of the brain, and it's getting sensory message from entire body. It getting message from entire body. इसको मैसेज पूरे शरीर से मिलते हैं. एक राजा की तरह है हाइपोथैलेमस, जिसे पता चलता है, जिसे प्रजा बोलती है कि भाई हमें धन की जरूरत है, इस बार फसल नहीं हुई, हमें अन्न की जरूरत है, अभी बहुत गर्मी पैदा हो गई है, हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारे राज्य में थोड़ी ठंडक बढ़े. सो हाइपोथैलेमस इज लाइक ए किंग and listening to each and every person. Okay, you are having some problem. Accordingly, hypothalamus is taking the decision. Okay, now we should do this thing. For example, किसी को fever आ गया. Number one, in the fever there is a high temperature. Or number two, maybe body became cold, या शरीर ठंडा हो गया. So now body is having temperature lower than the normal. Body का temperature जरूरत से ज्यादा कम हो गया. So hypothalamus will get this message and then start doing something. कि अरे गर्मी बढ़ गई है, पसीना निकाल दो. Start sweating. Then automatically body will become cold. Okay, ठंड बढ़ गई है, shivering पैदा कर दो. Automatically start be getting heat in the body. So hypothalamus always do the survey everywhere. Okay, circulation is good, wonderful. Oh no, circulation is not good, there is swelling in the knee. Okay, how to work on the swelling of the knee? The hypothalamus will do something improving the circulation and keeping the body in the homeostatic condition. तो इसीलिए कहते हैं कि हाइपोथैलेमस का काम है हमारे शरीर को होम्योस्टेसिस में बनाए रखना. हमारे शरीर का तापमान, हमारे शरीर में कौन सी चीज कितनी मात्रा में कहाँ जरूरत है, कब सेक्स हार्मोन बनाने हैं, कब ओवरी को मैच्योर करना है, कब व्यक्ति को के पीछे कुत्ता दौड़ रहा है तो उसे ज्यादा तेज दौड़ने के लिए ताकत देना है, कब आपके ऊपर किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो आपके अंदर एक उत्साह की वृद्धि करना है. सो हाइपोथैलेमस टेक ऑल द डिसीजन. समटाइम वी नीड टू रन अवे from some place. Sometimes we want to fight with someone. The ovary want to mature. So everything happening in the body, it's under the hypothalamus. That's why hypothalamus is called supermaster gland. It's controlling the pituitary gland. फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्वीन बोलते हैं. जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें एक ही क्वीन होती है, बाकी सब सर्वेंट होते हैं. In the same way, in the human body, there is only single queen, that is pituitary gland. The pituitary gland is getting command from the hypothalamus, right? So in this way, here I would like to bring a focus here on one thing. There are two masters in our body. One is supermaster and one is master. So supermaster means hypothalamus. Now it is giving command to our queen, that is pituitary, right? So the pituitary gland is called master. So we should have the idea, we should have the little idea about this understanding. हमें थोड़ा सा इसे समझना होगा. Then pituitary gland, or I will tell you especially
when we talk about the ovary, जब हम ovary की बात करते हैं, so in the term of ovary, we will talk about the anterior pituitary, because anterior pituitary, right? So hypothalamus is under the control of emotional brain. फिर hypothalamus is controlling the anterior pituitary, then anterior pituitary working on ovary, and ovary is working on uterus. This is the channel. You can understand if there is any problem happening in the uterus or any problem happening in the ovary, it's coming from your emotional brain. It's starting from the emotional brain or the limbic brain, or we can consider it's coming from the hypothalamus. So this is a sequence, right? Limbic system, hypothalamus, anterior pituitary, ovary, and uterus. And you know, hypothalamus play a very important role. और आपको क्या लगता है कि hypothalamus का वजन कितना होगा? कितने किलो का होगा hypothalamus? What do you think? Hypothalamus play a very important role. अगर आपका वजन 70 किलो है, तो आपका hypothalamus 1 किलो का तो होगा ना कम से कम? क्या लगता है? 1 kg का या 5 kg का hypothalamus? 1 किलो का हो? 100 ग्राम? 100 ग्राम? The weight of hypothalamus is just a 4 gram. We can consider how the 4 gram इतना छोटा चिप है, जैसे मोबाइल का माइक्रोचिप होता है ना, इतना छोटा है, only 4 gram, near about 4 grams, but having super power of supercomputer, right? Hypothalamus. So nowadays, most of the people are getting problem because of the disturbance in the hypothalamus. So I would like to bring a focus here, because we want to become the expert of ovary treatment. So we should have entire idea. That's my point of view. हम केवल ओवरी का पॉइंट ट्रीटमेंट सीखें, वो अधूरा होगा. हमें पूरा पैथोफिजियोलॉजी सीखना होगी कि आखिर कहाँ क्या हो रहा है. So in this way, whenever we talk about the brain, अगर हम brain की बात करते हैं, suppose I would like to bring in the brain, this is the hypothalamus. Suppose I am making the hypothalamus, right? So this is the hypothalamus. And here is the anterior pituitary. So this is the hypothalamus. It's connected with the anterior pituitary. It's connected with the anterior pituitary with one like a stalk like structure. For example, ये एक डंडी है, right? This is the tree, right? This is the tree. This is one stick. This is another stick. And from here, there are many leaves, right? Leaves. So in this way, if this is hypothalamus, ये hypothalamus है. And this is the pituitary gland. It's connected with the stick, stalk. So this is called stalk. They are connected with one stalk. Hypothalamus and pituitary are connected. So whatever the formation happening in the hypothalamus, they are coming from here. Right now we are just talking about the anterior pituitary. अभी हम सिर्फ anterior pituitary की बात कर रहे हैं. So whatever there is a formation of the hypothalamus, so it's with the help of pituitary stalk, it's coming to the anterior and the posterior pituitary, right? Now, two things I would like to tell you about the hypothalamus. Only two things. If you wish, if you might want to forget, no problem. You can forget it, but I will tell you here.
So suppose this is the hypothalamus. And this is the pituitary, right? Anterior pituitary. In the hypothalamus, there are two important things. In the medical exam, they're asking always these things. Number one, there is a very beautiful moon-like structure, right? This is in the hypothalamus. And number two, there is one more structure. There are two structures found in the hypothalamus, right? And hypothalamus is the part of brain. And we know brain is made by a neuron. Hypothalamus तो brain का part है और brain nerve से बनता है. So those two things are very much important in the hypothalamus, and they are producing reproductive hormone. So in the medical examination, it's a very common question, who is forming the reproductive hormone in the hypothalamus? So we are telling there are two things. One is a moon-like structure, or we are telling it arcuate nucleus. Arcuate nucleus. Right? It like a arch. ये arch की तरह होता है ना, ये arch है. इसलिए से arcuate nucleus कहते हैं. The nucleus like a arch. It's making the reproductive hormone. And there is another, it is called pre-optic nucleus. There are two things, right? You might forget, you remember, that's your best, but I want to tell you, these both are made by the nerve origin. दोनों ही एक nerve like origin से बनते, neuronal cell से बनते, neural cell. Neuronal cell. So now you have two options. Option number one. Remember the hypothalamus secreting reproductive hormone. Done, over, finish. कि hypothalamus reproductive hormone बनाता है. Option number two. The arcuate nucleus and the pre-optic nucleus in the hypothalamus making this hormone, right? I will tell you, जो हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं वही पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर रियल हार्मोन बनाते हैं. सो दिस इज नॉट द रियल हार्मोन, दे आर जस्ट ए फैक्टर. द फैक्टर मीन्स कि ये जब एंटीरियर पिट्यूटरी को आके जस्ट प्रमोट करते हैं, थपथपी देते हैं, बनाने के लिए उत्साहित करते हैं. द हार्मोन इज मेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. So the hypothalamus is just sending the message to the pituitary, please make this type of hormone in the body. We are in the need of this type of hormone. So pituitary asking, okay, tell me which hormone you need. So hypothalamus is telling we need GTH hormone. GTH का मतलब है gonadotropic hormone. हमें इस हार्मोन की जरूरत है. ये हाइपोथैलेमस ने मैसेज किसको दिया? एंटीरियर पिट्यूटरी को. तो कैसे मैसेज देगा? अब चिल्ला के तो बोलेगा नहीं, ए पिट्यूटरी जरा ये वाला हार्मोन तो बनाना. दे आर हैविंग सम डिफरेंट लैंग्वेज, सो दे विल रिलीज सम केमिकल्स, राइट? सो दैट आर कॉल्ड GRH, राइट? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. यानी गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कराने वाले हो. So if you are stuck with the name, so just remember this thing. There is some language of the hypothalamus, which, what is the language? The chemical language. So this secreting some chemical, it is coming to the anterior pituitary, then anterior pituitary making this hormone that is called GTH. Now the real work will start. The GTH is a very much important hormone, right? अब GTH भी एंटीरियर पिट्यूटरी को कमांड मिलता है, देखो भाई आपको GTH बनाना है,
दिस इज द कमांड ऑफ हाइपोथैलेमस। बट आपको दो डिफरेंट टाइप के जीटीएच बनाना, you have to make the GTH, but two different type of the GTH. Then pituitary gland is asking, okay, what type of GTH? तो हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को बोला, देखो मैं तुमको आटा दे रहा हूँ, तुमको कभी तो उसकी रोटी बनानी है और कभी उसका पराठा बनाना है ना, हमेशा रोटी रोटी नहीं बनानी, दो चीजें, चीज वही है. So hypothalamus is giving the message to the anterior pituitary. Sometimes you have to make this type of GTH. Sometimes you have to make just this type of GTH. Two different type of the GTH you have to make. Pituitary gland is agree. Okay. Okay. As per your command, will do. Pituitary gland ने बोल दिया ठीक है hypothalamus जी, आप जैसा आदेश देंगे हम वैसा बनाएंगे, है ना. तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने पूछा कि दो टाइप के बनाना है, उनके नाम क्या है? GTS, there are two type of GTS. Sometimes pituitary gland will make one, sometimes will make other. So the name of two different type of the GTH are number one FSH and number two LH. The meaning of FSH is follicle stimulating hormone, and the meaning of LH means luteinizing hormone. ये दो हार्मोन बनाना है, बस पिट्यूटरी ग्लैंड तुम्हारा इतना काम है, अगर तुमने इतना काम कर दिया then over, done, only make it too hard. So pituitary gland can't make hormone without the command of hypothalamus. बिना कमांड, ये उस घोड़े की तरह, जैसे घोड़े को आपने रस्सी पकड़ के खींचा, बोला चलो इधर, तो ही चलेगा, नहीं तो वो खड़ा रहेगा. Because there are lots of work. Anterior pituitary has to do many work. Anterior pituitary has to make hormone for adrenal gland, for thyroid gland, for growth. Many other thing has to done. Pituitary gland has to do. Pituitary gland को बहुत काम करने सारे hypothalamus के अंडर में ही है. हाइपोथैलेमस बोलेगा चलो ये बच्चा छोटा है, ग्रोथ हार्मोन बनाओ, इसको लंबा करना है, इसकी हड्डियां लंबी. पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगी ओके फाइन, ओके चलो एक काम करो, ये बंदा इमरजेंसी में, इसके लिए एड्रिनल वाले हार्मोन बनाओ, मतलब इसके ऊपर किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया है, कुछ ऐसे हार्मोन बनाओ ताकि ये लड़ सके. सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज always making different hormone as per the superior command of the hypothalamus. But right now there is a command for ovary, make GTH, sometime FSH, sometime LH, sometime both, sometime no one, nothing. तो दोनों के अपने अपने अलग वर्क. इज इट क्लियर? टिल नाउ इट्स क्लियर ना. देखिए ऊपर से हमने स्टार्ट किया है, ऊपर का क्लियर होगा तभी हम और आगे समझ पाएंगे ठीक से. फिर आप बोलोगे, मैंने पूछा FSH, आप बोलोगे FSH क्या होता है, कहां से बनता है, ओवरी में बनता है क्या? नहीं. यू शुड नो नाउ द FSH इज फॉर्म्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. FSH कहां बनता है, where the FSH is forming, you should have clear idea. Oh, it's made by anterior pituitary. It's not made by ovary, it's not made by uterus. अभी तक ओवरी यूट्रस तक तो हम पहुंचे ही नहीं है. अभी सिर्फ हम ऊपर के माले पर, केवल ऊपर ही है. We are on the hypothalamus and we are on the anterior pituitary. FSH and LH play very much important role, right? Now, so from here there is a formation of the two hormone. They play very important role, FSH and LH. Now I think you remember, and please remember the name if you don't know, but I'm sure that you might be knowing the name also very properly because it's very common. But if you don't know, don't worry, just remember the both name. The follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone are made by anterior pituitary, right? Okay. So now, the FSH
So we started our journey from limbic brain. It's working on hypothalamus. हमारा इमोशनल ब्रेन हमारे हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर रहा है. Then hypothalamus commanding the anterior pituitary gland. Now anterior pituitary gland secreting FSH and LH. They will work on ovary. इनका काम अब ओवरी पर होगा, right? So now we will be discussing about the ovary. अब हम ओवरी तक पहुंचेंगे. Now FSH, the target organ of the FSH is ovary and the target organ of LH is the ovary. But the FSH will be secreted and targeting the ovary. पहले सबसे पहले FSH का सीक्रेशन होगा जो ओवरी को टारगेट करेगा. क्योंकि ओवरी को टारगेट क्यों करेगा FSH? Because the meaning of FSH means follicle stimulating hormone. It means the hormone who will make follicle, जो follicle बनाएगा. अब ओवरी की बात आती है. अब पहले मैं आपको ओवरी समझाने के पहले मैं आपको पहले कुछ चीज समझा देता हूं ताकि आप लोग आगे चल के कंफ्यूजन में न जाएं. When will be discussing about the ovary? We are discussing, this is the ovary. We know there are two ovary in the female. One ovary in the right side, one ovary in the left side, right? Ovary and ovary. One is the right ovary, one is the left ovary. Inside the ovary, there is a ovum. ओवरी के अंदर होता है एक ओवम, उसे कहते हैं ओवम. अब इसका मैचुरेशन होगा, अब ये बनेगा पूरा मजबूत ओवम. स्मॉल सीड will be growing and becoming a fully grow, getting full, right? This all incidents will be happening inside the ovary, the maturation of ovum. तो पहले मैचुरेशन होगा, मैचुरेशन ऑफ ओवम, फिर होगा रिलीज ऑफ ओवम. These two things we have to discuss. लेकिन इन चीजों को समझने के पहले ही मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि when we talking about the ovum, we are going to discuss one by one many layers of the ovum. हम ओवम की कई लेयर्स का डिस्कशन करेंगे. ओके, सो पहले मैं आपको एक बना देता हूं ऐसे ही, फिर हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे. तो मानो ओवम अंदर है, राइट? देयर इज ए ओवम इनसाइड. But remember one thing, ovum is surrounded by many layers. ओवम बहुत सारी लेयर से सराउंडेड होता है. अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, हम इसको समझेंगे धीरे धीरे करके. सबसे अंदर ओवम, द इनसाइड इज ओवम. The outermost layer is called the outermost layer. We can see here. यहां पर जो सबसे बाहर की लेयर, इसे कहते हैं थीका सेल. थीका सेल, अभी बस नाम याद रखिए, थीका, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? फिर अंदर गए, फिर थीका सेल के बाद जब हम थोड़ा अंदर जाते हैं तो ये जो सेल होती है इसे कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल. ग्रेनुलोसा सेल.
फिर और अंदर जाते हैं तो मिलता है एक लेयर, इसे कहते हैं जोना पेलुसिडा, और सबसे अंदर मिला ओवम। बस 4 आपको भी चीजें याद, इसको समझाया हमने बिल्कुल भी नहीं अभी आप, लेकिन अब समझाएंगे तो आपको पहले से पता है कि भाई कुल मिला के तो 4 ही लेयर बनाएंगे, अंदर ओवम, सो डीप इनसाइड ओवम, देन द जोना पेलुसिडा, देन द ग्रेनुलोसा, देन द थीका। आप बोलोगे इतना सब समझाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट बता दो, है ना, जरूरत है, बिकॉज सम ये यही सारे तो मिलकर कोई मेल सेक्स हार्मोन बनाएगा, कोई फीमेल सेक्स हार्मोन बनाएगा, कोई सभी के अलग अलग काम। सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज ऑल थिंग्स इन द डिटेल्स टुमारो, राइट? आई थिंक फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है, स्मॉल स्मॉल डोज में समझेंगे। और इज इट ओके, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? सो टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग about the structure of the ovum and what is the meaning of that, right? We'll be working on that. आपके लिए एक होमवर्क है, you have one homework, सोचना है, when the female ovary start preparation of fertilization, मैं हिंदी में रिपीट करता हूं, when the female ovary, मतलब कौन सी उम्र में, कि फीमेल की ओवरी वो कौन सी उम्र है जब फीमेल की ओवरी ये तैयारी करती है कि हम मुझे फर्टिलाइज करना है और फर्टिलाइजेशन करना है, मतलब एक नया जन्म देना है, ऐसा वो कब पहली बार सोचती है, वो आपको बताना है। शैल आई रिपीट इट? फीमेल की ओवरी ऐसा पहली बार कब सोचती है या कुछ करती है या कुछ, जब, कौन सी उम्र में, कि उसे फर्टिलाइज कर, देखो जब सोचेगी तभी तो ओवम में डिवीजन होंगे, ओवम का मैच्योरेशन होगा, मैंने कहने की बात वो है, वो कौन सी उम्र, वो आपको सोच के बताना है। चलिए, यस जूही जी, यस प्लीज। सर, एक आंटी, एक पेशेंट है, उनको ना लेफ्ट नी में पेन है काफी। आपकी पहले तो आवाज नहीं आ रही है, हेलो, आप पहली बात तो आपकी आवाज यू नहीं आ हियर रही मी? है, दूसरी बात आपको जो अनम्यूट प्रश्न क्यों पूछना है? है, मैंने देखिए क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड विद द टॉपिक्स। सर, वो प्लीज सर, मतलब बहुत अर्जेंट क्वेश्चन है। नहीं, अर्जेंट क्वेश्चन है तो आप मैसेज करिए, क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड विद द टॉपिक, इट माइट बी यूट्रस, मैंने ओवरी। मैसेज किया था ग्रुप में, बट नो रेस्पॉन्स। देखिए क्या होगा कि थीम डिस्टर्ब मैंने होती है ग्रुप क्लास में में। किया था मैसेज, हाँ हाँ, ग्रुप में तो वो मुझे आई कैन मुझे अंडरस्टैंड, पर्सनल, इसीलिए मैंने लास्ट में पूछा है। हाँ, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है इट्स पर्सनल मैसेज करूँ मैं रिलेटेड, आपको? ऑलवेज रिलेटेड क्वेश्चन, और हटके क्वेश्चन तब भी पूछिए, लेकिन आप मैसेज करिए उसके। और दूसरी बात, आपकी आवाज भी समझ में नहीं है आपने क्या बोला ना सर, जी। अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, अभी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अभी हम अदर देन टॉपिक यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। आप ग्रुप में मैसेज करिए, मैं अभी रिप्लाई कर दूंगा थोड़ी देर। ओके सर, ठीक है सर। क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड विद द टॉपिक। यस पवन जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते पवन जी। सर ओवरी सिस्ट के लिए क्या दिया जा सकता है ट्रीटमेंट? अभी तो कहानी शुरुआत की भैया, रुक जाइए। अभी तो हम सिस्ट पे पहुंचे नहीं है, अभी तो यही नहीं पता कि सिस्ट बनेगा कैसे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, 2 दिन बाद से करेंगे ना, हाँ करेंगे, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। चिंता करते हैं। नहीं डोंट वरी सर, मुझे कोई चिंता नहीं है, आपके रहते कोई चिंता नहीं है सर। टेंशन नहीं। आपसे बहुत कुछ सीखा है सर मैंने। जी बिल्कुल, अभी बात करेंगे, पहले तो एक एक कदम, वन 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 में स्टेप, अभी ओवरी में पहुंचने दीजिए। पहले सिस्ट होता क्या है वो तो समझ जाए, कि सर सिस्ट में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, वो सर फिर कल क्लास का टाइम क्या रहेगा? थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा कल शेड्यूल। कल एक्चुअली कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना सुबह, तो कल का टाइम भी यही रहेगा। फिर हम परसों से फिर हम आपसे हम ग्रुप में डिस्कस करके देन एज पर द कंफर्ट ऑफ एवरीवन विल ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स सर।
So let's close the session. And if you have any questions related with the topics, please ask in the class, or you're welcome to ask any question in the groups. Right. Thank you so much. Closing the session.